A very good morning to one and all present here. It's my honor to welcome you all on this day where we will be celebrating the Festival of Lights, commonly known as Diwali, which shows us the victory of truth over evil. It reminds us of the festival season of joy, splendor, enthusiasm, and happiness. It symbolizes our joy, peace, and prosperity in hearts of people. So I, Asmi Devedi of class 8A, welcome you all to the special assembly. This is a day of celebration, tradition, and success, which cannot be started without God's blessing. So let's start our day with prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us all our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all that is evil. But deliver us from all that is evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, now and forever. Now and forever. Amen. Fetching information about things with which we are connected to is always good for us. So to increase our knowledge about Diwali, I would like to call upon Prisha Singh of class 8A, followed by Angel Chaudhary of class 8B for speech in Hindi. Good morning, respected teachers and my dear friends. Today, I, Prisha Singh of class 8A, is going to present a speech on the festival of Diwali. Diwali or Deepavali is often known as the festival of lights. The meaning of Diwali is rows of lighted lamps. On this day, Lord Rama with goddess Sita and Lakshman returned to Ayodhya from the long journey of 14 years of Vanvas. In order to celebrate their return, people of Awadh lighted up diyas and candles. Till today, people celebrate this day as a victory of good over evil. On this day, people worship Lord Ganesh and goddess Lakshmi for wealth and wisdom. On the occasion of Diwali, people light up their houses with diyas. They clean their houses and decorate their houses using lights, diyas and candles. And they make beautiful rangolis. On this occasion, people buy new things, wear new clothes, buy sweets and share gifts with their friends and family. Diwali is one of the biggest festivals celebrated in India. Diwali not only celebrates good over evil, but it also celebrates India's rich tradition. Diwali is one of the most important festivals in Hindu culture. It gets its name from the Sanskrit word Deepavali. Diwali is mainly celebrated in 5 days. Diwali gives strong bonding to our culture and our relation. It usually falls between the months of October and November. From this, I come to the end of my speech. Thank you. सुप्रभात। मैं एंजल चौधरी कक्षा 8वीं की छात्रा दिवाली के बारे में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दिवाली हर किसी के लिए खुशियाँ लेकर आता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। हर कोई इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाता है। साथ ही स्कूलों, कॉलेज, दफ्तर आदि में भी यह त्यौहार बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार साल में एक ही बार आता है, या तो वो अक्टूबर का माह में या नवंबर के माह में। दिवाली भारत के महत्वपूर्ण और मशहूर त्योहारों में से एक माना गया है। दिवाली आने से पहले
हमें घरों की साफ सफाई भी करनी होती है, क्योंकि कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी अस्वच्छ घर में पधारती नहीं है। इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, खाद्य पदार्थ एवं मिठाइयाँ खाते हैं, दीप जलाते हैं, पटाखे चलाते हैं। रावण को पराजित करने के बाद 14 साल के निर्वासन के लंबे समय के बाद भगवान श्री राम अपने राज्य अयोध्या लौटे थे। दीपावली का मतलब होता है अच्छी गतिविधियों के करीब आना और बुरी आदतों से दूर जाना। धन्यवाद। Diwali is a day to be happy that fills the heart and mind of kids, a lot of fun, new dresses, sweets, meeting friends and bursting crackers. Enjoying something is good, but in a limit is better. So, we will now see a Nukkad Natak that will teach us about Green Diwali. शांत का कमला पक पूजन को साथ में कमलावती लाई है। हवा के समान दिखा दे तो जागती ज्योति जला पाई है। स्वच्छता घर पर में भरकर दिलस्ती हस्ती दिखलाई है। दमन करने को फैलाकर दमनती दिवाली आई है। प्रदूषण मुक्त दिवाली लाई। प्रदूषण मुक्त दिवाली का संदेश देते हुए कक्षा 8 के छात्र आप सभी के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है आप सभी उनके संदेश को प्रयोग में लाएंगे। अगर दीपक से हो सकता है उजियारा, फिर हम क्यों ले रहे हैं पटाखों का सहारा। अगर दीपक से हो सकता है उजियारा, फिर हम क्यों ले रहे हैं पटाखों का सहारा। 30 प्यार, रोशनी का त्योहार, दीपों का प्रकाश जगमगाता हर पल, आतिशबाजियों की चमक, मिठाई का मीठापन और रंगोली के अंदर समेटे हुए रंग बिरंगे फूल। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब मनाते हैं दिवाली पूरे हर्ष और उल्लास से, क्योंकि इस दिन लौटे थे श्री राम वनवास से। श्री राम ने रावण का वध तो कर दिया, लेकिन आज हर मनुष्य के अंदर प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाला एक रावण बैठा है। तो क्यों ना आज हम इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम के जरिए संकल्प लें और अपने भीतर बैठे इस रावण का वध कर दें। रामायण के पन्नों में रावण को देखकर और अपने मन के अंदर झांककर हमारे मन के सिंहासन पर बैठा है एक रावण चिपका, ईर्ष्या, द्वेष और जलन का आभूषण पहनकर। पहले रावण ने धरती की पुत्री सीता का हरण किया था। आज के रावण ने तो धरती का ही हरण कर लिया है। बाहर परोश अंदर असुर, सीता हरण करके बैठे हैं असुर। आज नहीं बचेगी सीता, आज नहीं बचेगी सीता, आज नहीं बचेगी पृथ्वी, आज नहीं बचेगी पृथ्वी, कभी भी नहीं बचेगी पृथ्वी। अरे कभी तो लक्ष्मण रेखा कभी नहीं झुकी। याद रहे, याद रहे, याद रहे, याद रहे। रावण और राम दोनों है तुम्हारे अंदर, स्वर्ण दम की लंका जला दो, रावण का हरण कर। तब राम लगे थे दशरथ का वचन निभाने, और आज राम लगेंगे अपने पिता का आज्ञा का पालन करने। तस्मोमान श्रुति गमय का संदेश देता हुआ दीप हमें अत्यंत मनोभावन लगता है, क्योंकि दिवाली का पर्व है ही इतना अच्छा मनोभावन करने वाला। दीप का संदेश है ये, प्रीत का अनुदेश है ये। दीपमाला अनकंठो टिमटिमाता दीप्य हो प्रकट ज्योति निराली, यूं हम बनाए दिवाली। आओ हम सब मिलकर यह वादा करें, दियों से सजाएं अपने घर को और दिलों को रोशन कर दे दियों की रोशनी से। आओ हम सब मिलकर इस पर्यावरण को बचाएं, रोके उसे जो हमारी विरासत को निगल जाए। पटाखे नहीं जलाना है, धरती को बचाना है। पटाखे नहीं जलाना है, धरती को बचाना है। धन्यवाद। लाओ प्रदूषण मुक्त दिवाली, लाए सलाम खुशहाली। लाओ प्रदूषण मुक्त दिवाली। Thank you all. They gave us an amazing message for a green and safe Deepavali. With this amazing message, we should start with the amazing facts for days which come in the week of Diwali, like Govardhan Puja, Bhai Dooj and Dhanteras. To tell this, I would like to call upon Aryan Kumar of class 8A for Bhai Dooj and Dhanteras, followed by Shipra Singh, class 8B for Govardhan Puja.
Good morning. My name is Aryan Kumar and I am from class 8th. Dhanteras. Dhanteras is a signature of Diwali because we celebrate this day just a day before Diwali. Every year we celebrate this occasion on the Trayodashi of Krishna Paksh in the month of Kartik. There is a belief that on this day God Dhanvantri came out of the Amrit Mantra. Therefore, it is known as Dhanteras or Dhantrayodashi. Dhanvantri is known as the god of Ayurveda and he came out with the plot of Amrit. So, people buy utensils and other valuable items on this day. It is a belief whatever we buy on this day gets double. So, people prefer buying some valuable items and some farmers also buy seeds. Each and every festival is beautiful with some traditions. Similarly, on Dhanteras, people clean their homes and perform their puja and also keep diya for Indra. Bhai Dooj. Out of many social relationships that human beings share, there are some that always stand out. The relationship between a brother and sister is one such bond. This relationship doesn't know any definition, boundaries or descriptions, be it between people related by blood or by emotions. This feeling between a brother and sister is one to be cherished. No matter how older you grow or how far the journey of life takes you, you are still connected with blood and heart. Bhai Dooj is one of the festivals that make us feel love and care. It carries an immense emotions linked to it. As per the Hindu calendar, it is celebrated in the month of Kartik after Diwali. The festival is largely popular over the country. The main essence of this festival remains in the idea to share love, blessings, joy and respect. Even if it was circled around custom and traditions, it has been more modernized over the years. There has been a lot of modifications in the way rituals are perceived and performed, but the central idea of Bhai Dooj still remains the same. Thank you and have a nice day. Good morning to one and all present here. Today I, Shipra Singh of class 8B, is going to present my views on Govardhan Puja. Govardhan Puja is a Hindu festival in which devotees worship Govardhan hill and prepare and offer a lot of vegetarian food to Lord Krishna as a mark of gratitude. For Vaishnavas, this event is mentioned in the Bhagavata Purana as an incident when Krishna lifted Govardhan hill to provide shelter to villagers of Vrindavan from torrential rain. This represents that God will save the devotees who take refuge in God. The festival is celebrated by most of the Hindu denominations all over India and abroad. With these facts in mind, we got to know how lovely this festival really is. With these words, I would like to thank everyone for joining me today. Thank you, have a nice day, and last but not the least, a very happy Diwali. Thank you, Aryan and Shipra, for giving us bundles of knowledge. To celebrate this optimistic change, people decorate their homes in a colorful manner and exchange greeting with others. To uplift this decorative festival, we have our beautiful girls from grade 8 with their cheerful movements. प्रेम के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती। प्रेम के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती। आंगन ये लगता है पूजा की थाली, गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई दिवाली, देखो दिवाली आई दिवाली, गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई दिवाली, देखो दिवाली आई दिवाली। यारों के साथ और अपनों के साथ दुनिया में बिखरा मस्ती और प्यार, पटाखों की लड़ियां फूटे मत वाली, गोकुल धाम की देखो दिवाली आई दिवाली, देखो दिवाली आई दिवाली। जाति धर्म भाषा के सारे रंग हम झोली, जीवन के आंगन में देखो रंगोली। मिलजुल कर हम खूब जलाते, हंसी और खुशी की फूल झड़ियाँ, खट्टी मीठी तड़तड़ी
घड़ियां, सुख की सुंदर सी लड़ियां। मंगल हो सबका, हो खुशहाली, गोकुल धाम की देखो दिवाली। आंगन ये लगता है पूजा की थाली, गोकुल धाम की देखो दिवाली, आई दिवाली। गोकुल धाम, मिनी इंडिया, ये है छोटा इंडिया, छोटा इंडिया, देखो इंडिया। Thank you all for the energetic performance. Let us now welcome the man who doesn't need any introduction and known amongst all of us for his wisdom and knowledge. I'll request our Honorable Principal Sir to please come on the stage and say a few words. Good morning, Reverend Father Ajay K. Chaku, teachers, students and parents. I wish all of you a wonderful Diwali festival. As a celebration of the victory of light over darkness, it is a most welcome and timely antidote to the uncertainty that surrounds us. We have all had to adapt to the realities of the coronavirus pandemic. Yet, even amid all these upheaval, Diwali will stand tall as a striking expression of your tradition and your spirituality, your devotion and your faith. As we celebrate Diwali today, let us celebrate it as a day to illuminate one's inner self and remove all the darkness from within. Diwali signifies the victory of good over evil. The lights and diyas are present everywhere, signifying the eradication of dark shadows and evils. All the people celebrating and praying together create an atmosphere of love and purity. It is the day to reflect on one's past and make better decisions in the coming year. This day signifies forgiving, forgetting, as it is like giving a fresh start to everything around you and to yourself. It is a celebration of prosperity in which people give gifts to families, friends and employees. Diwali gives up a message to remove all the darkness within ourselves and illuminate our inner self. Happy and prosperous Diwali. May God bless you all. Thank you very much. This is a special assembly which has came so good and remarkable because of the participants, viewers and the teachers who helped us. So I would like to give a vote of thanks to all the kind-hearted viewers who spared their time for us. Thank you and happy Diwali.